तक ले जाने के लिए है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिनकी आंखें नहीं खुली हैं या जिन्होंने जानबूझ के आंखें मूंद ली हैं कि ऐसा इस देश में हो रहा है और इस देश की फैब्रिक को ये करप्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन जहाँ व्यवस्था में हम लोगों का अधिकार है, हम सब पार्टियों का अधिकार है, हम लोग मिलकर इस देश के लिए एक सही व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं और इसीलिए हम अपने आपस के जो भी छोटे मोटे जो झगड़े हो या हमारे विवाद हो, उनको हम उनसे ऊपर हटकर हम एक प्रयास कर रहे हैं कि एक सामूहिक व्यवस्था हम देश के लिए राजनीतिक बना सकें। इसलिए जहाँ हमको अधिकार है और हमारे अधिकार क्षेत्र में हम कुछ कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग ऐसा करने में संपन्न है और हम ऐसा करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये एक मैनिफेस्टो बन जाएगा, पीपल्स मैनिफेस्टो। हम आज चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, और उसमें हम एक ही बात कह रहे हैं कि ये पीपल्स मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है, एक पीपल्स कैंपेन का हिस्सा है और पीपल्स कैंडिडेट आज खड़े हैं। और इसलिए जहां सरकार और पीपल में एक खाई बन जाती है, वहां आप जानते हैं रेवोल्यूशन की एक बुनियाद बन जाती है। और रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि एक संपूर्ण परिवर्तन आता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और सभी विचारधाराएं जहाँ पर एकत्रित हुई हैं, वो भारत में एक संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन का एक आधारशिला बनेंगे। There is a clear indication that existing law is not effective. This has happened, as you've already been told, wherever special circumstances emerge. We did this in Protection of Women's Act, for instance, Protection of Children's Act. In the case of tribals, in the case of scheduled castes, scheduled tribes, etc. Although there is a general law that applies to everybody, in specific circumstances, when there is a clear indication that the general law is not being effective, you then, as a matter of a special emphasis in a particular field, particular area, or particular kind of violence that you want to combat, you bring about a special law that sends a very good message. But more than that, you are able to provide the special requirements of combating that kind of violence. In some cases, we don't have a general witness protection law in our country, and therefore, in some particular kind of cases, witness protection becomes extremely important. We have some provisions that relate to compensation, but compensation generally is left to a very prolonged procedure, etc. Therefore, compensation has been introduced in this as well, so that the victims are compensated. Now, of course, you can go even further. There are cases in the world where people of a locality are fined and taxed for something unwholesome that happens in that locality. So that public participation and public sense of responsibility is enhanced and emphasized. Well, I will respond by saying that the drafters of this bill would be very happy to receive any suggestions from any quarter, certainly from the media, and they will then examine it very carefully and introduce further amendments if they are called for. But I can say from my own experience that the ambition, if it's a very high ambition in matter of bringing in this kind of legislation to address something which is both a social evil as well as a crime, both morally and in terms of understanding of law, if you pitch it too high, sometimes in the pursuit of excellence, you fail to achieve the good as well. We had a very bad experience with the communal violence bill in our time. We were convinced that it was done not with the intent of targeting anyone or protecting anyone specially, but in terms of our understanding of what communal violence had done to our society. But that was converted into a political slugfest instead of being seen in terms of what it really meant. And these people have very sensibly tried to keep it at the level of affront to humanity, attack on the human soul,
and what you need to do to address the attack on human soul, despite all kinds of laws being available. And the important thing about this law is it's not a law that quietly will be made and then will be given to the police to implement, but this is a law that is inviting and hopefully is exciting a lot of interest of ordinary people, the people who really are the strength of our civilization in our country, and their participation, support and endorsement is what will give it to strength, take it much beyond and much further than any law in terms of its effectiveness. तो तत्काल कोई कानून बनाया जाए, जल्दीबाजी में बनाया जाए, ये मांग कर कि हमें आज ही इसकी आवश्यकता है, तो उसमें बड़ी समस्या ये है कि उसमें कोई कार्रवाई हो, फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहाँ पर रोक दी जाए, तो उसका असर और उल्टा पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कानून में, जो कानून बनने में समय लगता है, तो एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। ऑर्डिनेंस में ये होता है कि आपको तत्काल कुछ पावर्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस को भी आप तब कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और पार्लियामेंट सेशन में हो तो ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता, तो आप पार्लियामेंट में का सेशन पूरा करें, उसमें वैसे ही देर हो जाएगी। इसमें तो हमें पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक समर्थन हमको इतना चाहिए कि दबाव पड़े, पार्लियामेंट पे दबाव पड़े कि इस कानून को पारित करना अनिवार्य है और इसको तत्काल जल्द से जल्द इसको पास किया जाए। तैयार करने में बहुत समय नहीं लगता है, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं यहाँ पर, हमारे नौजवान साथियों ने ये काम किया है, जो लोग कानूनविद होते हैं और जो लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, वो रात भर बैठकर कानून बना सकते हैं, उसमें समय नहीं लगेगा। समय लगता है तो फिर वो समिति में लगता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज में लगता है, या फिर पार्लियामेंट को समय मिले कि उस पर चर्चा हो और चर्चा होने के बाद वो पारित हो, इसमें समय अवश्य लग जाता है। और जब तक वो ना हो तब तक जो कानून अभी है उसी को अच्छी तरह से लागू करने का प्रयास किया जाए, वो भी सरकार की एक दायित्व है और सरकार अपना दायित्व का निर्वाह करे।